अध्यक्षता करेंगे लीलाधर मंडलोई जी और प्रतिभागी कविगण हैं अशोक कुमार सिंह, दिलीप जावेरी जी, किरीटी सेन गुप्ता, मधु राघवेंद्र, महुआ सेन और विनीता अग्रवाल जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम आपको बताना चाहेंगे कि सभागार में वरिष्ठतम साहित्यकार और गुजराती साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गुजराती के लिए श्री सीतांशु एस चंद्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आज जितने भी अतिथि यहाँ मौजूद हैं उनका स्वागत अभिनंदन हेतु आइए आदरणीय अंग वस्त्र द्वारा आज के अतिथियों का स्वागत अभिनंदन जी। वाह, सबसे पहले अध्यक्षता कर रहे हैं आज के कार्यक्रम की लीलाधर मंडलोई जी, उनका स्वागत करते हुए। अच्छा अच्छा, नहीं उन्होंने मुझे लिखवाया था सर, सॉरी मैं, अच्छा अच्छा ठीक है सर, सॉरी मैं आपसे जी 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 साहित्य अकादमी है जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी 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 सर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर, मैं आपसे, मेरा परिचय नहीं है। आप इतने वरिष्ठतम रचनाकार हैं, गुजराती के वरिष्ठतम साहित्यकार हैं और आपको हम अपने बीच पाकर बहुत गौरवान्वित हैं। बहुत अभिनंदन सर आपका जी। अब स्वागत है तो अशोक कुमार सिंह जी, श्री अशोक कुमार सिंह जी। श्री दिलीप जावेरी जी जी, श्री दिलीप जावेरी जी। श्री किरीटी सेन गुप्ता जी, स्वागत अभिनंदन। श्री मधु राघवेंद्र जी, प्लीज कम दिस साइड। स्वागत अभिनंदन। आदरणीय महुआ सेन जी, सुश्री विनीता अग्रवाल जी, आप सभी अतिथियों का बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वागत आदरणीय आपका, धन्यवाद सर आपका। भारत काव्य की भूमि है। वेदों के समय से लेकर आज तक इस भूमि पर काव्य की धारा अबाधित रूप से प्रवाहित हो रही है। सैकड़ों भाषाओं में सृजित मधुर कविताओं और गीतों में जैसी गहनता और वैविध्यपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति हुई है, वह भारतीय काव्य परिवेश को अनूठा बनाती है। शायद ही कोई भूमि होगी जहां इतनी सारी भाषाओं में श्रेष्ठ कविता की इतनी पीढ़ियां एक साथ उपस्थित हों तथा वह धारा हजारों वर्षों से निरंतर प्रवाहमान हो। साहित्य अकादमी कई दशकों से बहुभाषी कविता पाठ के कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है। यह सत्र अनेक भाषाओं में कविता को प्रोत्साहित करने की अकादमी की उसी प्रतिबद्धता की अगली कड़ी के रूप में आयोजित है तथा साहित्य प्रेमियों को सीधे कवियों के मुख से अनेक भाषाओं में कविताएं सुनने का अवसर प्रदान करता है। बहुत स्वागत अभिनंदन पुनः आपका। बहुभाषी कविता पाठ, विभिन्न भाषाओं में भारतीय कविता। पहले मैं कवि को आमंत्रण दे रही हूँ अशोक कुमार सिंह जी, उनका एक संक्षिप्त परिचय। अशोक कुमार सिंह जी विगत 4 दशकों से लेखन कर रहे हैं। आपके 11 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। आपकी पुस्तक नव कलेबर भगवान जगन्नाथ पर विशेष रूप से लिखा गया प्रथम आधुनिक कोडियाज कविता संग्रह है। आपकी रचनाओं में एक त्रयी, तुमा दर्द, निजा पेन से मन का पेन,
नकलबले और अदेला अंधारा, रक्तराग, माँ पेन लोरी, गीता दशहरा, गीता काता, दृश्यांतरा, द्विभाषी, अपरापारा तथा अंग्रेजी में द रेजिंग टाइम ऑफ क्वाइट शोर भी शामिल है। सर, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन है, आमंत्रण आपको। Gratitude, Sahit Academy, for providing this platform and this august company of this elite gathering. I primarily write in Odia and I also write in English. I would prefer to read my poem in Odia and also a translation of that. So this poem was an unfortunate incident in Valley where a teacher was gone down. So the title of the poem is Mu Nathilebi. Mu Nathilebi, ଯେଉଁଠି ଖସି ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ରକ୍ତାକ୍ତ ପର, ସେଇଠି ଗଛଟିଏ ଲଗେଇ ଦେବ ପିଲାଏ, ଉଡ଼ା ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ବସେଇ ଦେବେ ଘର। ମୁଁ ନଥିଲେ ବି ଭୁଲି ଯିବନି ପିଲାଏ ଭାରତ ମାତାର କୋଳ, ଲମ୍ବିଛି କାଶ୍ମୀରଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଗଙ୍ଗାଠୁ ଗୋଦାବରୀ ଆମର ଅତି ନିଜର। ମୁଁ ନଥିଲେ ବି ରାମ ରହିମ ବଲବନ୍ତ ତମାଙ୍ଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ କଳି, ଦେଶ ମାତାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପତେଇ ଦେବ ଛାତି, ଖାଇଲେ ଖାଅ ଗୁଳି। ମୁଁ ନଥିଲେ ବି ନିଆର ଦେହରୁ ଉଠେଇ ଆଣିବ ଚିନାର ଗଛର ଡାଳ, ମୁଁ ନଥିଲେ ବି ନିଆର ଦେହରୁ ଉଠେଇ ଆଣିବ ଚିନାର ଗଛର ଡାଳ, ଲିଭେଇ ଦେବ ଯେତେ ପୋଡ଼ି ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଲିଭେଇ ଦେବ ଯେତେ ପୋଡ଼ି ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ, ପୁଣି ଛାଇଦେବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଚାଳ। ମୁଁ ନଥିଲେ ବି ରୋଶନାରା, ମୁଁ ନଥିଲେ ବି ରୋଶନାରା, କାହା ଧମକରେ ଢାଙ୍କିବୁ ନାହିଁ ମୁହଁ, ବନ୍ଦ କରିବୁନି କ୍ଲାସ, ଚୁପ୍ କରିବୁନି ତୁଣ୍ଡ, ହରାଇବୁ ନାହିଁ ଦମ୍ଭ, ଗଡ଼ିଲେ ଗଡ଼ୁ ମୁଣ୍ଡ। ମୁଁ ନଥିଲେ ବି ଭୁଲି ଯିବନି ମୋ ପଢ଼େଇଥିବା ପାଠ, ଆମ ଦେଶର ଜୟଗାନ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଭୁଲି ଯିବନି ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କଳା, ଭୁଲି ଯିବନି ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କଳା ଆମର ଅତୀତ, ହାରିବନି ଗଢ଼ି ଦେବାକୁ ସୁନାର ଭାରତ, ଦୃପ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ। Now I'll read the translation of that in Hindi. इसका अनुसृजन किया है उदयन सुपकार जी ने। मैं ना रहूं तो भी जहाँ पर गिरा है गोली से छलनी, मेरा रक्त रंजीत पंख, यही एक पौधा लगा देना होनहारों, जिस वृक्ष में परिंदे बना सके नीड़। मैं रहूं न रहूं तो भी ये भूल न जाना ये बच्चों, भारत माता की विशाल गोद फैली कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गंगा से गोदावरी है तो वो हमारी। मैं न रहूं तो भी राम रहीम बलवंत तमांग, मत उलझना व्यर्थ कलह में, मातृभूमि की रक्षा के लिए तनी रहे छाती, खाओ गोली बिना कोई आपत्ति। मैं ना रहूं तो भी जलती हुई आग से तुम निकाल लाना चिनार की डाली, बुझा देना जलती हुई हर तस्वीर, हर टूटी छत बनाने की करो हिम्मत। मैं ना रहूं तो भी रोशनारा किसी धमकी से डर, चेहरा न ढकना, पढ़ाई न छोड़ना, जुबा पर मत लगाना लगाम, खोना न स्वाभिमान, चाहे तो जाए जान। मैं ना रहूं तो भी मेरे पढ़ाए सबक रखना याद, हमारे देश का जयगान राष्ट्रगीत, भूल न जाना वो शत्रु संहार की कला, हमारा वो उज्जवल अतीत, हारना मत, गढ़ेंगे नया भारत, भविष्य जिसका है दृप्त। So this is the poem, and my next poem is Drishyantar, which is footage. से मंदिर कांथरे जहाँ छाड़ी आसिली से तुम देह, जहाँ सजल दिशुछि सकाळे पत्रर पिठीरे से तुम लुह, जो माटी मुठाए फिंगी देली आकाश को से तुमर अनादर, जहाँ फिंगी हेला नहीं से तुमर आश्लेष। आउ किछि देखि पारिबि नाही, आउ किछि देखि पारिबि नाही, देखाई भी पारिबि नाही तुमको हाथ धरी, आउ किछि देखि पारिबि नाही,
देखाई भी पारिबी नाही तुमको हाथ धरी मु तो काढ़ी देइछि चश्मा आखिरु मु तो काढ़ी देइछि चश्मा आखिरु तुमे काले उठेई नहीं देखिबो मो भीतर झड़र दृश्य आम दुई जनकर चश्मार पावर समान. So just this is my own translation. Footage. What I left in the walls of temple is your body. What I left in the back of leaves are the dews of your tears. That I threw to the sky is a fistful of smog. What I failed to throw was your tightly woven hug. Now I can't see anything. Now I can't see anything. I can't show you anything either. Holding your hand, I have taken up my specs, lest you will lift them to watch the rising storm within me, because you and I have the same power lens. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक कुमार सिंह जी. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आगे क्रम बढ़ाते हैं. अगले क्रम में मैं जी अगले क्रम में मैं आमंत्रण देने जा रही हूं. उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखती हूं. दिलीप जवेरी जी 4 कविता संग्रह, 1 नाटक, गुजराती में 1 यात्रा वृत्तांत तथा अंग्रेजी में 5 पुस्तकें लिखी हैं आपने. आपकी कविताओं का हिंदी, मराठी, बांग्ला, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी, चीनी, जापानी, कोरियाई, इंडोनेशियाई, मलेशियाई, आयरिश, रोमानियाई, स्पेनिश भाषाओं में अनुवाद एवं संकलित किया गया है. आप हांगकांग के म्यूज इंडिया और नदवाह में संपादक बोर्ड में हैं. आपको दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया में कविता पाठ और व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया जा चुका है. करतल ध्वनि के मध्य में आपको आमंत्रण दे रही हूँ. आदरणीय, बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका. Making a chair. Making a chair is the most natural thing and very easy. You can wait for autumn for every leaf to fall, or you can pluck out leaves one by one. Like a crow picking on mouse flesh. Pull down the tree like an elephant uprooting forests, and remove the twigs like a wolf tearing at the tendons. Split it apart like a crocodile, the bones. Bore in the holes like a woodpecker. Fixing staves in crosses and hammering nails is an ancient art. Make smooth the surface with putty provided by the pulp. Obtain paints from the ancestors of the trees buried for billions of years to re-emerge through oil wells. Resins from the freshly peeled bark will provide the sheen. Now, sit back on the chair, set in the veranda, and contemplate over the sprouting green of a glass blade from a crack in the asphalted pavement, patiently awaiting a forest. ભગવાનની વાતો. I have written ભગવાનની વાતો and I am an atheist. સાચું કહું, મને લાગે છે કે અટાણે ભગવાનને જરાય ટાઈમ નથી. આ ગંજના ગંજ ખડકાયેલા સકળ સચરાચરમાં સંભાળીને સાચવેલા સમયની સોય ખોવાઈ ગઈ છે. અને કોનો કાળ આવ્યો છે
કે ભગવાનને વતાવવા બતાવવા સંભાળવા સંભળાવવા સાથ દેવા જાય. ઘડીભર શ્વાસ લો, દિલને ધડકવા દો, ખાઓ પીઓ હંગો મૂતરો, તેવડ હોય તો ઘર ઘર રમો, નહીં તો પથારીમાં ઊંઘી જાઓ અને વળી કુકડા ભેળા વેળાસર ઉઠો. To tell you the truth, I feel at present God has absolutely no time. In these colossal stacks after stacks of sentiment and inner totality, the prudently preserved needle of time is mislaid. And whose time has come to remind and report and support God for a search? Take a deep breath. Let your heart beat calmly. Have a meal, drink, take a crap, piddle, and if you are still capable, play at gaming dolls in the bed. Otherwise, go to sleep and wake up in time with the cock crowing. Inextricably, he can make a mountain tremble and stir a shoot of a leaf. When his interest be aroused? When will his interest be aroused for the lost needle? Abandon such repetitive prying. Time dwelled in the shadows, in water drip, hanging pendulums, cranking keys, springs, buttons, the sun, the moon, and even in the tidal waves. Its identity was in the countless sand particles surpassing the stars in the sky. In almost every shining atom enclosed in a single granule of sand. Hardworking and omniscient, God knows this and can at once move everywhere with a snap of his fingers, which even before it is heard can tweak time. Babish time is not even aware of that when free, God can take a leisurely round of a galaxy, prune a stained and wilting shapeless comet, and step back to have a proper look before returning satisfied. Later, unlatching the entrance of an atom would keenly note the squatting neutron, circular catch-me-quick running of electron and proton, capering photon, and the grip of graviton, and running around of gaming children particles. But there is no time in searching for it. God has forgotten that the atoms and molecules have been ceaselessly performing all this to please him. Homer is performed, bells toll, holy books lie opened, devotional songs are chanted, lamps, candles, wood, incense are burnt. Fragrance mixing with vesper smoke. Sacred sweets are cooked. Sheep, lambs, heifers, oxen, camels, coconuts are consecrated. Under their distinct banners, the crowds holler against each other. Even in such bloodthirsty clamor, calmly volumes after volumes are penned about God's luster. Mien, miracles, messages, canons, laws, decrees, courts in the most minute details.
But does God have any leisure? The needle of time? If you get some time free, if you get some time free, bring an easy chair out in the front yard, spread a large mat while the birds are chirping and the sun rays are lengthening and a nip is in the air and a little moisture also. And water is being poured over the corn floor and the sugar is eager to be sprinkled over, and the children who squat before and after shaking their frocks and shorts to count their shells and marbles. Then they demand in unison, tell a new story. Tell a new story today. Not one of the heroes, Romeo, Juliet, king and queen, ghosts, cranes and crows, but the genuine God. At that time, you will have loads and loads of time. And the last one, before writing poetry. Before writing poetry, one must learn many languages before writing poetry. The language of shadows and scents, to know the separations and absences. Language of rusted wheels and sharp arrows, to understand inertia and starvation. The language of roof holes speaks the searches by inquisitive sunbeams. The patchy speech of lost walls has retained the damp songs of raindrops. Winds know the language of desert and the sea and keep a constant correspondence with sand. But the language of dust, spreading quietly through the window crevices on windless nights, is known to the sand only. My footprints make the dust word. रिव्यूड रिच आउटलुक मद्रास कोरियर अन्य जगहों पर प्रकाशित हुई हैं। आपने कविता और गद्य की 12 पुस्तकें लिखी हैं एवं 2 पुस्तकों का अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त आपने 8 संकलनों का संपादन भी किया है और इसके अलावा आप सेन गुप्ता जी एथोस जर्नल के मुख्य संपादक हैं। आप बिटन चक्रवर्ती द्वारा स्थापित प्रमुख स्वतंत्र प्रेसों में से एक हवाकल पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड के अंग्रेजी विभाग का कार्य भी देखते हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आदरणीय आपका। Thank you. Thank you, Sahitya Academy, for inviting me. And I'm here for the past more than 2 hours, but I'm yet to know who is introducing all the poets to the rest of the people. May I request you to briefly introduce yourself first? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति प्रवीण खरे और मैं एक बाल साहित्यकार हूँ और नाटक विधा में भी लिखती हूँ। सभी विधाओं में लगभग बच्चों और बड़ों के लिए समान रूप से लेखन करती हूँ और नाटक लेखन मेरा मुख्य विधा है मेरी। बहुत धन्यवाद। Thank you so much. इसके अलावा एक चीज़ और है, ये रेडियो और टेलीविज़न की एंकर भी रही है। बहुत सारे प्रोग्राम करती हैं। Yeah, That because is we also do one of the events, things. like, you know, several events we are doing events for the past 15 years or so, and I've noticed that the moderators for any event remain unnoticed.
So it's very important as one of the participants of this event to know who is introducing the poets, the writers to the rest of the people. My first poem, this is from a book called Rituals. It came out in the year 2019. The poem is called From Being Late in Calcutta. So at one point in time, I was in Calcutta, and whenever I arrived late in office, what happened? So the entire story is written in a form of a poem. From Being Late in Calcutta. As soon as you mark me late, I'll talk about events that guide me to the records you maintain. I would say crowded buses invite passengers from unscheduled halts. I would emphasize the number of speed breakers on road and their poor performance in preventing accidents. I would tell you trains run late. Signals are laggy between stations. I won't forget to mention how a sudden protest makes the train stand still for hours. I would discuss about the day I reported late owing to instantaneous suspension of underground train services as a man killed himself on the railway lane. I would ask you to remember why I came late the other day. If you can recall, I had indigestion despite eating at home. I blamed farmers for sprinkling pesticides on crops. I pointed at my salary that failed to buy organic veggies. And then I would invariably argue about maintenance and population. I would appreciate China, one-child policy, and their claim on how the government prevented 400 million births, and how India thrives on the revenues earned from selling condoms and nicotine. I'll explore other issues the next time I reach late. The next poem is called Masala Muri. Muri, in Hindi we call murmure. So it's masala muri. Ginger slices do not titillate my taste buds again. The tangy golden of mustard oil does not tease my nostrils anymore. Onions fail to dew my eyes now. They were never kept in cold water before Baba chopped them while he got his lenses damp. Ma had tears. On every stormy Sunday, we invariably had power cuts, and Baba cooked dinner for us all. A moderate serving of muri mixed with onion, ginger, and blobs of oil. On such occasions, we used to sit close, facing each other. We shared our stories. From airing endless grievances on our barren curriculum, the dialogues on the utility of learning Sanskrit, to refuting Ma's advice on being courteous even to strangers we would meet. Our room shined in kerosene lamps. Load shedding no longer casts its spell. The backups are prompt and steady. We order food, the mobile app comes handy, but muri seldom makes it to our monthly grocery. The next monsoon, I wish to buy a new lantern, and I'll light it once in a while to accompany the old snack and fresh stories in our family. Thank you. This is my newest book. It's called Water Has Many Colors. It came out in 2022. My friends know I'm a huge fan of the one and only Rekha, and this poem is dedicated on Rekha. Give me a minute, please.
The poem is called Bhanu Rekha. It's after Bhanu Rekha, stage name Rekha, one of the divas of Indian cinema. That I'm an aesthete and a Ray enthusiast prompts one to show curiosity. She is married, isn't she? To this, I evoke her facade. Red adds to her ebullience, but she is considered the greatest camouflage. That she dons golden conjuvarum and radiant fripperies for public appearances, my mentor describes her as a Christmas tree. I don't find it cynical, I address the concern. Despite green needles, the tree is furnished with animated reveries. That admirers fail to detach her courtesan avatar from real life identity has nothing to do with the gajras she carries. I am jealous. The jasmines are lucky. That we hardly remember the initials of her first name does not prevent sunshine to fall for her. Looking at her mid-parting, I find relief. Scalp should look ivory. She says she prefers being called mystic, but not mysterious, and intriguing, but not sexy. This helps refract her luminescence, and I spot the prism. White has its share of density. Thank you. The next poem, the last poem, is from the same book. The poem is called Hibiscus, and it begins with an epigraph by the famous Bengali poet Shukanto Bhattacharya. It begins like, I have to live as long as I'm alive. I'll clean the muck of the earth. My pledge to the newborn, I must make the world livable for you. And now my poem begins. Part 1. The woe ceased with his death. The world expanded. They never missed a chance to cram her to misery. Can we be of help? Number 2, feed the earth water, she flows in abundance. Allow the planet to breathe, the air is her consort. Free her from plastics, they choke progress. She endures the mess her words make. Number 3, can I become a tree? As I rampart the sinew with my root embedded in her tissue, I'll bloom like a hibiscus. The blush will endorse my bloodline. Number 4, infestation ushers in a day of budded majesty. I wish the flower could turn into a coral basking in the sunshine. Mother awaits the levitating saint. Thank you so much. Thank you, sir. नेक्स्ट पोइट मधु राघवेंद्र भारतीय कवि और क्यूरेटर हैं। आपने कविता की 4 पुस्तकें लिखी है, मेक मी सम लव टू ईट, स्टिक नो बिल्स, बीइंग नॉन एसेंशियल और गोइंग होम। आपकी रचनाएं साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं और अन्य भाषाओं में अनुदित भी हैं तथा उन्हें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सांस्कृतिक संगीत और समकालीन नृत्य में प्रस्तुत किया गया। आपने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में 2022 पेन इमरजेंसी वर्ल्ड वॉइसेस कांग्रेस ऑफ राइटर्स में सहभागिता की है। आप आयोवा विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय लेखन कार्यक्रम में एक रेजिडेंट कवि रह चुके हैं। आप नियमित रूप से कविता कार्यशालाओं का आयोजन और विश्व स्तर पर आयोजित साहित्यिक समारोहों में कविता पाठ करते हैं। मधु राघवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन है। Thank you. I'm really honored to be a part of
my fellow poets reading with me. I really adore most of their work. And to the chair, my respect to the chair. Thank you to the Sahitya Academy for having me. Also, I think there are many of us are English poets prominently, but care different tongues. तो हमारी है ही, तो मैं polyglot भी हूँ. तो let me start with an accessible poem which I feel I want to read right now. எனக்கு எல்லா பாஷை தெரியாது ஆனா அன்பு புரியும். मुझे सारी भाषाएं तो नहीं आती पर प्यार समझ आता है. मला सगळ्या भाषा माहित नाही आहे पण प्रेम माहित आहे मला. আমি সব ভাষা জানি না কিন্তু ভালোবাসা বুঝি. মই সব ভাষা না জানো কিন্তু প্রেমর ভাষা জানো. Love and poetry can be found anywhere. It can be found in Kabir's dohas, Namdev and Tukaram's abhangs, Tiruvalluvar's Tirukurals, or the Baul Geet of Bengal, or in the Bhatiali songs of Assam. Love sticks out like the tongue of a Kali, suckles like a baby on its mother's breast, trickles like raindrops from tendrils, rolls down like beads of sweat while lovemaking, drives at 200 miles per hour without a seatbelt, and faints at nothing. Love and poetry faint at nothing. Love and poetry are fearless. Thank you. तो सॉरी इसे ही ऑन कर लूँ, ये ठीक है. मैं सारी मुझे कभी कभी मन करता है सबकी ओर देखूं तो फिर आंखों में ऐसे बिना किताब की ओर. तो खैर तो मैं चेयर से माफ़ी मांगता हूं कि मेरा बायोडाटा बिना दिए मैंने शुरू कर दिया. खैर उन्होंने तो पढ़ा, वो फॉर्मल वाला है. तो द पोएम इज कॉल्ड बायोडाटा. A Tanjore Maharashtrian born on the Hooghly come to my Avva's Kannadiga lullaby. Served. Okay. A Tanjore Maharashtrian born on the Hooghly come to my Avva's Kannadiga lullaby. Soaked in sambar and rasam, served day after day with begun or aloo bhaja. I speak nomadic of my ancestors. Marathi from where they migrated, Tamil from where they settled, Kannada from porous borders, Bengali from the softness of the Ganga clay, English from the convent where I schooled, reciting Hanuman Chalisa at the school's chapel, waking up to MS Subbalakshmi Suprabhatam, finding peace in the wealth of Mehboobe Ilahi, in love with a Galo girl from Arunachal, where the shadows of clouds rest on mountains and the Yomgo and the Siang fall in love. Who speaks better Telugu than my mother, sings ghazals like Penaz Masani and loves Ghalib like Purani Dilli ever did. I have no belongings. Poetry is all I'll ever need. So, ये और एक कविता है आर्टिस्ट. तो ड्यूरिंग कोविड वो नॉन एसेंशियल एसेंशियल हो गया था, तो आर्टिस्ट को बोल दिया नॉन एसेंशियल. तो मैंने खैर एक कविता लिखी उसमें. तो आर्टिस्ट. I don't mind being the non-essential. I don't mind being the non-essential. Even a child takes its mother for granted. It does not run back to its mother until it is hurt. Nobody first thinks of water when they arrive at an exquisite dinner party until they are choking. I don't mind being the non-essential, knowing you will come looking when things are broken and nothing else works. Art is non-essential. Art is non-essential until it is not. So, तो इसकी हिंदी अनुवाद की जरूरत है क्या? कोई कह रहा था कि हिंदी अनुवाद की जरूरत है. तो खैर अच्छा ठीक है. अब कलाकार. मुझे नहीं खलता गैर जरूरी होना. एक बच्चा भी अपनी माँ का सही मूल्य नहीं जानता. वह अपनी माँ की ओर तब तक नहीं भागता जब तक उसे चोट न लगे. किसी शानदार डिनर पार्टी में पहुंचे मेहमान पानी की तलाश तब तक नहीं करते जब तक हलक में खाना नहीं अटक जाता. मुझे नहीं खलता गैर जरूरी होना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम ढूंढते हुए आओगे जब तुम्हारी दुनिया ढह रही होगी और कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा. कला तब तक गैर जरूरी है जब तक कि जरूरी न हो जाए.
ये आखिरी छोटी सी कविता, ये ओन है, इसका नाम ओन। We are also the songs we don't sing, the food we don't eat, the rituals we don't believe, the cultures we don't live, the art we don't make. We are made of others. The othering of others is the othering of ourselves. The difference between us may be our pace of breath. Slow down, and our breaths too shall align. इसकी हिंदी अनुवाद से खत्म करता हूँ। अपना। हम वो गीत भी हैं जो हम गाते नहीं, हम वो निवाला भी हैं जो हम खाते नहीं, वो प्रथा भी जो हम मानते नहीं, वो संस्कृतियाँ भी जो हम जीते नहीं, वो कला भी जो हम बनाते नहीं। हम दूसरों से ही बने हैं। दूसरों को पराया करना अपने आप को पराया करना है। हमारे बीच का अंतर है शायद हमारी सांसों की गति। जरा गति धीमी करें, हमारी सांसें भी संरेखित हो जाएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, अगर सब लोग हौसला अफजाई करेंगे तो आप टैक्स नहीं लगाएंगे ना? कर सकते हैं ना? तो हौसला अफजाई आप लोग एक दूसरे की करते रहिए। यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महुआ सेन। महुआ सेन प्रख्यात लेखिका, कवयित्री और संपादक हैं। आप बुल्सआई आउटसोर्सिंग की दक्षिण शाखा की निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आपका एक कविता संग्रह प्रकाशित है। आपने फ्लॉग द जर्नी संकलन के संपादन के अलावा 70 से अधिक संकलनों का सह लेखन किया, जिसे अमेजन की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों की सूची में जगह मिली है। मैम, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। Hello, you can hear me, right? Thank you so much for that introduction. And first of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to Sahitya Academy for having all of us together under the same roof. And I'm extremely humbled and honored to share the dais with some of the writers and poets that I deeply revere and admire. So without much ado, I'll begin my poem. My first poem is called Banaras. Banaras, as we know, is not a place. It's an experience. It's an experience that, teaches us to celebrate this existence. It's an experience that brings us closer to ourselves. And it's an experience that, reminds us that between birth and death, life is just a parenthesis. As P.B. Shelley had said, worlds on worlds are rolling ever from creation to decay. Like the bubbles on a river, sparkling, bursting, borne away. And on that note, my poem. The ochre sun sings on the breast of Ganga. A procession of flickering diyas sail to a destination unknown. Chanting of mantras reverberate in the air. The mesmerizing evening aarti pays homage to Ganga, the mother of all life and death. Colors float on the waves of sound, conch shell blows punctuating the chorus. People scatter ashes of their deceased kins into the holy Mother Ganga, an offering of the last funeral rites. On the other side of the river, the milieu is a nebula of dark. Smell of burning woods wafts into the air, and stubborn flames spiral upwards, marking a space in the sky, as if stretching their arms to touch the stars. Thick, black smoke escapes into the sky to take siesta beside the waning sun, perhaps? Chanting of Ram Naam Satya Hai pulsates in the air. The smell of burning flesh envelops the surrounding. The pyre gyrates groundward, disintegrating, crumbling, reducing everything to ashes. Light fills my body. Light fills my body, blinds my eyes, drenches my heart, my throat, my mind, my soul, deposing my form. And untethering binds to all that I believed myself attached to a moment back. Mortality cocks a snook. Mortality cocks a snook, peeling the skin of transience. We are here, this moment,
and then we are not. Naked truth, peaks, grins, cradles mortality's girth, ballet of life, death. Thank you. My second poem is based on Adrian Rich's words, asleep but not oblivious to the unslept, unsleeping. My delicate fingers nimbly skim over the tear-drenched pillow cover. I wipe my tears, breathing in the fragile lungs of the rusted air. I remember the old ice cream vendor outside our school gate. We would often buy popsicles from the vendor, and we called him Chacha Ji. During winters, he would stand all day, stooped, crouched, with the same grating tone, ice cream le lo, ice cream. Not a single footfall near his cart. I could see hope shivering in fear in his mud-stained turban. Existence was an anathema for him, or so the 10-year-old I thought. My heart cried every single day, does he earn enough to feed his family? I often pondered. And one day, I secretly broke my piggy bank, counted the change, 256 rupees and 75 paise. I gave it all to Chacha Ji. He gestured, bless you, as I saw a few teardrops trickling down his wrinkled cheeks, keeping the door of memories ajar for decades down. I remember Dolly, caramelized and ebony-skinned teenager, a balloon vendor in our neighborhood with an aura of melancholy around her. There was a holy serenity that dripped from her tangled bronze hair. She had a serene presence that captivated all who came near her. Dolly toiled to feed the mouth of a 5-year-old brother. Food was always scarce. She shared her share of morsel with her little brother. Hope was blind, parched just like her brother's mouth. I saw the grayness in the purlieu of her mortgaged sky. I saw the grayness in the purlieu of her mortgaged sky. I wished to scour the gray with the tiny fingers until it became frothy white. I failed. Durga Puja Ashtami. Durga Puja Ashtami, I remember grandfather standing in the center of our little village temple. He was reciting his customary annual abriti. The temple was reverberating with festive fervor. We all were decked up in best of our attires. My gaze fell upon a little girl, almost my age, at the temple's gate. Tattered clothes, bare feet, an eternal black of the night hung in the hole of her murky floral frock. Her facial symmetry tugged at my ribcage. My throat pained as I tried to gulp the lump. I opened my tiny money bag, took out 50 rupees note that Dadu gave me as my pocket money for puja fare we called Mela. I gave it to her along with Kiss Me toffees and a packet of Phantom that I had in my pouch. Her hesitant eyes had a fleeting, faint flicker of light. She gestured a thank you. There are days when the emotions drain my energy and salty water eddies around the brown of my eyes. I think of Ice Cream Wale Chacha. I think of the Ice Cream Wale Chacha. I think of the little girl in the temple. I think of them all. I think of Dolly, left on the precipice of a cliff. I close my eyes and I try to sleep, never oblivious of the unslept, unsleeping. Thank you. This is my last poem. This is the Shadorma, which is a Spanish form of poetry written in 6 lines, and the syllabic pattern is 3-5-3-3-7-5. I drink life, savoring each sip. You caress your pink thoughts on the back of my bare nape, licking mottled bruise. 2. Your hope hugs, endearment nudges. You circle reverie on my quivering bare back. Your warm breath soothes me. 3.
The crimson of your love melts me, warms my soul, swaddles me, tracing hope on my bosom, wraps me in the now. 4. We make love in the scent of your words that you carve in my ears with cursive calligraphy of rushing heartbeats. 5. I sigh peace in cyan lilac of your arms, for you lick the what-ifs from my tired brow, and I melt in you. Thank you. थैंक यू मैम। अगली कवियत्री हैं विनीता अग्रवाल। 4 कविता संग्रह टू फुल मून्स वर्ड्स नॉट स्पोकन, द लॉन्गेस्ट प्लेजर ऑफ द सिल्क ऑफ हंगर प्रकाशित हो चुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार की संयुक्त प्राप्तकर्ता और संयुक्त राज्य अमेरिका के साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए गायत्री गा मार्श मेमोरियल पुरस्कार की विजेता भी हैं। आप उसावा लिटरेरी रिव्यू में काव्य संपादक के तौर पर जुड़ी हैं। आपने जलवायु परिवर्तन पर आधारित एंथोलॉजी ओपन योर आईज का संपादन किया है। आपने कश्मीरी कवि गुलाम रसूल नाज़की पर एक संस्मरण संग्रह का संपादन किया है। हाल ही में आपने ईयर बुक ऑफ इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश 2020-21 का सह संपादन किया है। बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम मैम। Thank you everyone. Very good evening to everyone, to my colleagues and to everybody else who's here and sitting patiently and listening to us. And respected Chair Leeladhar Mandloiji, a very good evening to you too. So day after tomorrow is the 6th of August, and it reminds me of 6th of August 1945, when Hiroshima was bombed by the atomic bomb. And the first poem is in memory of that event. And although it was this humongous energy atomic bomb, it was titled, ironically, it was called The Little Boy. I'd like to read a little note on that and then begin my poem. On the 6th of August in the spring of 1946, following the Hiroshima bombing, the ginkgo trees bloomed again and continued to do so every spring after that. Today, each tree has a name and is marked by a plaque. They are now natural memorials, reminders that evolution has equipped life to survive even the greatest catastrophes wrought by humans. So this poem is titled Hibaku Jumoku, which is the Japanese name for the ginkgo tree. Hibaku Jumoku Survivor Trees. 73 years later, the A-bomb ginkgo trees still grow in Hiroshima. They'd sprouted shoots a year after the bombing, sapling flags of resilience. Jujube and persimmon, inventing a language of survival, seeds filled with hymns. Little boy, something resolved to stand up to you as you descended from the skies. Rising from ground zero, a fist of saffron yellow, a crown of golden amber. See how it sparkles, how it defies the dead wood of a uranium year. The ginkgo was a leveler, a balm to the burns. Adorn your bosom with its fan-shaped leaf. Thank you. So the general consensus is that when you write poetry based on a fact or a true incident, you tend to fictionalize a part of it. You tend to not include all the facts as they happened. But this next poem, titled Stroke, is one rare attempt where nothing is fictionalized. Stroke. A morning might begin like this, windows closing to light, a punch of darkness delivered to the solar plexus of a day. Your voice crepitus on the phone, saying you'd had a fall, that you could barely move, could barely swallow. Me husking, I'll be right there, through the long tide grip of rain on my heart. 6 hours of being a squirrel in panic.
racing to her dray. By the time I reach, kind neighbors have shifted you to the hospital. You're in the ICU, all tubed up. I climb the mountain of the moment. Your eyes brighten when they spot me. Your gaze sows my wounds. Daddy, do you remember? Do you remember that documentary that we watched together? A Jacana father attending to his nest, raising chicks, warding off danger. I'm thinking of it now. Our hands cling to each other's. 2 weeks later, I know a numbness colder than your pulse. A flattening of all things worthwhile. I dread somewhere that penguins vocalize to wake up the unresponsive dead. How do I vocalize this rail of pain? Loss, the size of a peepal tree, takes roots inside my chest. For years it grows, leaf by leaf. For years, the earth feels heavier than usual. Thank you, thank you. So I've been moving around many places in my life. I must have lived in at least 9 different cities, over a period of, let's say, 20 years. So this poem stems from that moving around all over cities, not being able to settle down in a particular place. It's titled New Place. They said that Shani, the god of Saturn, was too powerful to lock gaze with. Be sure to keep your eyes at his feet, they said. I did. But what I remember the most was the muddy track that led to the temple, the arbor of trees wet in patches, how it sheltered my head, and how that made me bawl for a good 15 minutes. The trees epitomizing worship and benevolence. Strangers stared at me, feeling too awkward to approach and ask why. Every time we step out of our homes, we agree to meet strangers. Sometimes we agree to converse and risk standing out like English breakfast tea amidst the all-permeating aroma of coffee. We come of age, really grow up, when it dawns on us that begin and being are anagrams. Like, for example, by the time I had moved 9 cities in as many years, I could say guava in 9 languages. Always beginning, always being. So I'd like to end my reading with a ferocious gender poem. It's titled Kali's 10 Arms. Arms speak at night, with rough nails against a braiding touch, sinews gashing strength, and then they speak in the morning, an unwinding of hope cradled in the bosom of a new day, splintering slivers of light after light. They speak between headlines, breaking news, ranting, stumbling TV anchors, lost in the windpipes of choking patriotism. They speak at dhobi ghats, where dirty linen is brazenly washed in public slaps, thuds at every stroke of the wooden baton, though nothing is really ever rendered clean. Arms are weapons for survival. You're here, though you didn't ask to be, and now you must fight. Every breath a battle, every curve of womanhood a playground, fortunes not disclosed, victories not acknowledged. Naive of you to think that filigreed amulets, carved bracelets, gold, silver bangles were what arms were for. No, arms are wielders of fate, fingers pointing skyward, fist whamming through hearts of stone, balled and socketed to shoulders, aching to shed the burdens of the vagina. Arms want no ornaments, these arms. All they want is an arm's length of distance from hooded cobras of exploitation, or they want a mace that recognizes bad blood. Thank you very much.
थैंक यू मैम। और अब हम आज के इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर हैं और संपन्नता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। और अभी तक हम सब एक दूसरे को सुन रहे थे और अध्यक्ष महोदय को सुनने की बारी, जो धैर्यतापूर्वक आप सभी को सुन रहे थे। एक छोटा सा परिचय, वैसे उनका काम बहुत बड़ा है। विख्यात कवि हैं, प्रसार भारती के निदेशक रह चुके हैं। आपकी कविताओं का अंग्रेजी, रूसी, नेपाली, बांग्ला, उर्दू, ओडिशा, मराठी, गुजराती और पंजाबी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको कबीर पुरस्कार, पुष्किन पुरस्कार, रजा पुरस्कार, नागार्जुन पुरस्कार, शमशेर पुरस्कार, किशोरिया मोनकर पुरस्कार, रामलस शर्मा पुरस्कार, बागेश्वरी पुरस्कार, कृति मोहन वर्मा पुरस्कार और साहित्यकार सम्मान से आप सम्मानित किए जा चुके हैं। बहुत करतल ध्वनि के मध्य में आमंत्रण दे रही हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री लीलाधर मंडलोई जी को। स्वागत है आपका, अभिनंदन। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं इस बात को जानते हुए थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा हूं कि ये जगह शफी शौक साहब की थी, यानी कि साहित्य अकेडमी ने जिनको ये काम दिया था, और मैं उनका स्थानापन्न तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, चूंकि वे नहीं थे तो मैं उनकी जगह आपके सामने रहा और आपको सुना। मित्रों, ये बहुत सम्यक और अद्भुत काव्य पाठ रहा कुछ अर्थों में। आप जानते हैं कि हमारे सामने कई भाषाएं थी, तो इन कविताओं में जो स्वर, जो दृश्य, जो रंग और इसके अलावा जो सरोकार निकल कर आ रहे थे, तो उनका एक तरह का प्रभाव मेरे मानस पर पड़ा। यानी जो असरात आए तो उनको लेकर ही मैं अपनी कुछ बात सबसे पहले कविताओं के बारे में कहूँगा। और ये जो असरात थे, ये उनकी बहुत त्वरित टिप्पणी है, क्योंकि आप बहुत, जब आप चीज़ों को सुनते हैं तो आपके हाथ से बहुत सारी चीज़ें छूटती भी हो, ख़ास तौर पर जब दूसरी भाषाओं की हो। लेकिन इसमें एक बहुत वैविध्य था, मतलब इस कविता में एक रूपता नहीं थी, यानी एक कविता दूसरी कविता से बिल्कुल अलग थी। तो दो पंक्तियां याद आती है कि शकीब अपने तारुफ के लिए, ये बात काफी है, शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। यानी कि ये सारी कविताएं, चाहे आप भाषा की दृष्टि से देखें, विचार की दृष्टि से देखें, आप कहन की दृष्टि से देखें, भाषिक मुहावरे की दृष्टि से देखें, सारी कविताएं एक दूसरे से अलग हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात सुनते हुए मुझे एक पंक्ति याद आई। कविता जल में निमग्न अग्नि है। आप जानते हैं जल पंच महाभूतों में से एक है, तो कविता जल की तरह क्या करती, वो आपकी देह में भी 70% है और 3/4 तो पूरी दुनिया में जल ही जल है। कविता में जल का अर्थ ये हुआ कि वो प्रेम, करुणा और मनुष्यता, इन 3 चीजों को रिप्रेजेंट करती है। और जब इन 3 चीजों को इसलिए रिप्रेजेंट करती है कि ये दुनिया जैसी है वैसी बनी रहे, उससे सुंदर हो सके। लेकिन जब इसके खिलाफ कुछ शक्तियां हस्तक्षेप करती हैं, आक्रमण करती हैं, तो यही कविता अग्नि का रूप धारण करती है। तो बहुत भीतरी परतों में इन कविताओं को सुनकर ये दोनों चीजें लगी कि उसमें जल भी है और अग्नि भी है। मित्रों, कवि कौन होता है? कवि वो होता है जिसकी एक आंख हंसती हो और दूसरी हो रोती।
वो हंसता इसलिए है कि जमाने में कुछ ऐसा घट रहा है जो नहीं घटना चाहिए। तो एक लेखक जब हंसता है यानी कि वो इंटरवीन करता है, वो उसकी आलोचना करता है और वो दृश्य से उसको हटाने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल हथियार की तरह करता है। और जब वो दुनिया को देखता है, जैसे कबीर पूरी दुनिया को देखकर रोते थे, उनकी तो बड़ी मशहूर पंक्ति है। तो ये जो कविता में हंसने और रोने दोनों का भाव है, ये भी मुझे जो अलग अलग कविताएं थी उसमें दिखाई दिया। वैसे अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो कविता की बात हो, नृत्य की बात हो, चित्रकला की बात हो या संगीत की बात हो, इन सारी कलाओं की जमीन प्राथमिक रूप से अमूर्त होती है और वो अमूर्त से मूर्त की तरफ एक यात्रा करती है। लेकिन इस यात्रा को करते हुए आपकी कला में अगर आपकी कोई निजी उपज ना हो, तब तक आप एक बड़े कवि नहीं होते हैं। आपकी कविता को एक आकाश तब मिलता है जब आपकी कविता में उपज होती है। बहुत सारे लोग कथक नाचते हैं लेकिन बिरजू महाराज एक होता है। बहुत सारे लोग गाते हैं लेकिन अमीर खान साहब एक होते हैं या भीमसेन जोशी एक होते हैं। तो आपकी ये जो निजता है, उसके नुकूस इन कविताओं में मुझे लगातार दिखते रहे और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने आप सब लोगों की कविताएं यहां सुनी। इन कुछ संकेतों में बात करने के बाद चूंकि समय ज्यादा हो गया है, तो मेरी भूमिका कविता पढ़ने की है, अध्यक्षता करने की मुझे नहीं मिली हुई थी। पर चूंकि मैं रसिक हूँ कविता का और कलाओं का, मैं फिल्म में भी काम करता हूँ, चित्रकला में भी काम करता हूँ और भी कई नाटक से लेके तमाम चीज़ों में। मतलब एक जो कलाकार वो तो पागल होता है ना, तो हम लोग बड़े अलग किस्म के पागल हैं। तो हम लोगों को आपस में जब एक दूसरे का आर्ट देखने को मिलता है तो हमारे मन में कुछ बड़ी बातें होती है। तो मुझे भी लगा, तो मैंने कहा कि आपसे थोड़ा सा शेयर करूं, क्योंकि इस अध्यक्ष नाम की ये जो व्यवस्था है, इसमें अगर मैंने ये नहीं किया होता तो हो सकता है आप बोलते कि ये क्या है। तो अब मैं दो एक कविताएं सुनाता हूं आपको। आप भोपाल में हैं। भोपाल में आप का इस बार बारिश ने बहुत अच्छा स्वागत किया। तो पहले तो भोपाल की इस बारिश पर कविता, लेकिन ये ठंड के दिनों में जो बारिश अचानक आती है, वैसे ये भी अचानक ही आई है, तो वो कैसी होती है। तो इसमें इस कविता का जो शीर्षक है, और ये कवि शमशेर की स्मृति में लिखी गई है जब वो यहाँ भारत भवन में हुआ करते थे। इसका शीर्षक है धीना धीधीना तीना धीधीना। ये एक ताल होती है, कहरवा। दिन कई दिनों से बेहूदगी में बीते। भोपाल कमबख्त बारिश के उदास गीलेपन में धुंधला स्ट्रीट लैंप सा रहा। एक अधमरी चेतना की अजब सुस्ती कि कई प्याले चाय गुटकने का सिलसिला जारी। बारिश इतनी अल्लड़ कि कभी झटक झूम तो कभी चुप इतनी कि हवा चिकोटी काटती चले। चूल्हा पिछवाड़े बमुश्किल किस अजब नींद से जागा। बच्चे रंज में
मनहूस बुद्धू बक्से पर खींचे। हवा इतनी मैली कि सड़क पर अटाला धूल धक्कड़ का। लोग बुनियादी सोच से बाहर रजाइयों में दुबके। राहत जो थोड़ी बहुत नसीब तो धरती की कोख से अकुआती गंध से। खोलती पंख मानो अनगिनत मुर्गियां। अध खिले अंडों से झांकते चूजों को चूमती किस तरह। किस कदर खोया रहा मैं कि देखा बोगनविलिया बरसों बरस बाद। एक पूरा दरख्त फूलों से हंसता रहा ऐन चौखट और मैं बेवकूफ बेपरवाह। फूल ऐसे कि दूध में गिरे सेंदूर के रंग से खिले। फूल ऐसे कि दूध में गिरे सेंदूर के रंग से खिले। गिरती उन पर छुपा छुपी मैं धूप खिलंदड़ी। टहोका मारती जब बोगनविलिया में अलसाई चिड़िया चहक जाती। टहोका मारती जब बोगनविलिया में अलसाई चिड़िया चहक जाती। मस्त हो डोल उठता झपताल में बोगनविलिया। धीना धीना धीधीना तीना धीना। धीना धीधीना तीना धीधीना। जाने कब निकले उदासी को चीरते हुए शमशेर बाहर। जाने कब दाखिल हुआ चुपके से बोगनविलिया मन भीतर। घर इस तरह घर हुआ बोगनविलिया को पहचानता। ये अभी जो यूक्रेन और उसके पहले इराक के युद्ध चल रहे थे, तो अब चूंकि मैं टेलीविजन में रहा हूँ, फिल्म में काम करता हूँ, तो अब आपके पास दृश्यों से ही चीजों को जानने का कुछ बचा रहता है। तो सब देखना कि सब सलामत है या नहीं है। तो एक दृश्य, आज कोई मिसाइल नहीं फूटी। आज कोई मिसाइल नहीं फूटी। आज कोई बम नहीं गिरा। आज कोई चीखो पुकार नहीं है। आज गांव सुकून में है। आज गांव सुकून में है। आओ आओ आज की रात जी भर के प्यार कर ले। आओ आज की रात जी भर के प्यार कर ले। क्या पता कल ये रात नसीब हो कि ना हो। एक ये बहुत छोटी सी कविता है। मीर साहब का एक बहुत प्यारा शब्द है टुक। टुक यानी थोड़ा या जरा। वो बहुत बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम अपने बड़े शायरों को पढ़ते हैं तो उनका कुछ चला आता है। टुक इस दुनिया में, टुक जिंदगी है। टुक इस दुनिया में, टुक जिंदगी है। टुक प्यार कर लो। टुक इस दुनिया में, टुक जिंदगी है। टुक प्यार कर लो। टुक तुम हो, टुक मैं हूं। मेरे बाल बढ़ गए, लेकिन मैं अपना सिर नहीं काट सकता। मेरे बाल बढ़ गए, लेकिन मैं अपना सिर नहीं काट सकता। मेरी मुट्ठियां क्रोध से भर उठी हैं, लेकिन मैं अपने हाथों को नहीं काट सकता। मेरे पांव चाइयों, खून और मवाद से भरे हैं, लेकिन मैं अपने पांव नहीं काट सकता। मेरी आंखों से आज का भारी दुख बह रहा है, लेकिन मैं अपनी आंखें फोड़ नहीं सकता। मेरे दिल में नफरत का बवंडर उठ रहा है, लेकिन
मैं इसे मार नहीं सकता, क्या करूं? इसमें दुश्मन के खिलाफ घृणा से अधिक क्या करूं? इसमें दुश्मन के खिलाफ घृणा से अधिक इस दुनिया के लिए बहुत मोहब्बत है, इस दुनिया के लिए बहुत मोहब्बत है। और ये आखिरी कविता, इस कविता का शीर्षक है रोबोट। इस कदर जिंदगी से उदास ना होता, इस कदर जिंदगी से उदास ना होता, न चुपके चुपके रोता तन्हाई में, दुख सुख से बेखबर होता, न कविता लिखता, न आलोचना सुनता, न दिल लगाता, न सहगल को सुनता, न मेहदी हसन को, न कन्हैया को, न रामचंद्र गुहा को। अगर मैं रोबोट होता तो प्रेम न करता, अगर मैं रोबोट होता तो प्रेम न करता। प्रेम किया कि मनुष्य हूं, प्रेम किया कि मनुष्य हूं, मनुष्य हूं इसलिए रोता हूं, मनुष्य हूं इसलिए रोता हूं। शुक्रिया साथियों, आप सबके साथ आज की ये शाम खूब रोशन हुई। हमने एक दूसरे को नहीं, ये तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं, मेरा समय तो खत्म हो गया 8 मिनट। चलिए, दरअसल क्या कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे दोस्त एक दूसरे के बनते हैं, तो ये दोस्तों के बारे में कविता है। नहीं नहीं नहीं, दुनिया में कम से कम 2-4 दोस्त तो ऐसे हों जो रास आए अपनी कमजोरियों में, हंसे इतना खुलकर कि उनमें मक्कारी ना हो, बात करें भी तो ठीक सामने, आंखें घूमे ना किसी और तरफ शिकारी सी। बात करें तो ठीक सामने, आंखें घूमे ना किसी और तरफ शिकारी सी। करो ये सब भी तो कोई उज्र नहीं, इंतजार ना करो किसी की पीठ घूमने का, इंतजार ना करो किसी की पीठ घूमने का। घूमने पर जो करोगे वार तो रह जाएगा बस इतना सा मलाल कि होते हुए विदा बेचारा न देख सका तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी। उसी का है, अब समाप्त होता है। नहीं नहीं, सांप के काटने से नहीं हुई ये देह नीली, नहीं नहीं, सांप के काटने से नहीं हुई ये देह नीली। कल रात मैं अपने दोस्त के साथ था। शुक्रिया। और इसी के साथ बहुभाषी कविता पाठ, विभिन्न भाषाओं में भारतीय कविता का ये सत्र यहीं संपन्न होता है। और बहुत अच्छी रचनाओं का रसास्वादन किया। और लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच, आप सब हमारे मध्य थे, तभी शायद इतनी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली। आप सभी अतिथियों का और पूरी हमारी ऑडियंस का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।